Hi guys, a very good morning to all of you. I'm Sabha, your English faculty at Tollywood. Good morning, Pavan, Jia, Prabhat, Arnav, Geeta. A very good morning to all of you. I hope I'm audible and visible to you all. Just let me know once. एक बार confirm कर दीजिए if the session is streaming and am I audible and visible to you all. Good morning guys. Good morning everyone. Good morning Sandeep. So we will start today's session. आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे. The session is going to be extremely important because we have so many good vocabs today. Okay. So अच्छे vocabs हैं. I know that you have your SBI Clerk Mains examination this week, but still editorial will play important role, guys. So do not skip editorial. अगर कोई habit develop कर लिया है तो keep that habit. How much time does it take to watch the editorial session? Either you attend live session or you watch the recorded one. It doesn't take much time. Okay. So along with your preparation, this is because most of the times you see the vocab that we learn here, of course they are going to help you. गीता माइट भी अगर लेट नाइट किया होगा तो आई डोंट नो बिकॉज कल तो मैंने काफी लेट होमवर्क लिया है दैट इज अराउंड 10:30 सो माइट बी दैट गुड मॉर्निंग आनव गुड टू सी यू अगेन ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इफ आई टॉक अबाउट यस्टरडेज होमवर्क see there are many people those who say कि मैम I'm bad at writing so bad at writing means the best improvement is to start doing the homework okay because सबसे पहले हम लोग जो है सेंटेंस फॉर्मेशन से स्टार्ट किया था आई डोंट थिंक दैट आई गॉट योर होमवर्क गीता ठीक है so yesterday's homework was done by Sabri, Arno, Arju, Sanjeev because still there are many who are making mistakes basic जो grammatical mistakes है वो होती ही हैं आप लोगों को ठीक है Geeta, forward me on that group. I will correct that. Okay. So Sabri, Arno, Arju, Sanjeev, Nana, um, Rekha Singh, Asha Patnaik, then Ronit Patnaik, Kavita Jaiswal, Niveka, Santosh Kumar Gupta, Ritesh Kumar, Geeta Singh. I got your homework. But I didn't correct it. Sorry, I got your homework. I will do the correction. Okay. Dildar Hussain, I don't know how it got missed. Ram Ray, Sonali, then Dayanidhi, Neeraj Sharma, Sankalp, Jia, all these people did the homework. Okay? Arju didn't get your homework, so you didn't receive my reply. Might be again same problem. ठीक है गीता आई रिसीव्ड योर होमवर्क बट ये मैंने नहीं देखा था थैंक यू अर्नव थैंक यू आई विल डू दैट ओके बाकी जिसके नहीं रिसीव हुए मुझे प्लीज फॉरवर्ड इट टू मी पर्सनली पिंग इट टू मी आई विल डू द करेक्शन ठीक है सो गाइस प्लीज दोस हु आर न्यू जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं एक बार फटाफट से सभी लोग चैनल को लाइक कर दीजिए शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ओके सो यू आर इन द लिस्ट एक सेकंड देखूं जरा हाँ अर्जू ओहो योर्स इज आल्सो नॉट करेक्टेड व्हाई हाँ yours is also not corrected Arju अच्छा might be I will do the correction I think that I have missed a few homeworks I will do the correction don't worry okay don't worry guys I will do the correction okay no worries चलिए आगे बढ़ते हैं today's quote is our greatest weakness lies in giving up see do not give up ठीक है do not give up our greatest weakness lies in giving up the most certain way means the most sure way okay to succeed is always to try just one more time जब आपको लगे बहुत हो गया अब नहीं करना I want to give up तो लास्ट में have this hope कि एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं so the time you have this just I want to try one more time definitely you will never fail guys because एक ना एक टाइम तो आएगा ही जब when you will be finally successful so the overall simple thing is that do not give up okay बिकॉज अगर गिव अप कर दिया जितनी भी एफर्ट आपने अभी तक डाली है दैट विल लीड यू नो रिजल्ट और अगर थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे इफ यू बी अ बिट मोर परसिस्टेंट थोड़ा सा और पेशेंस रखेंगे डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल ओके सो रिमेंबर दैट थिंग so if I talk about glimpse of today's session so we are going to start with the revision session कल हमने जो भी vocabs देखे थे जो कुछ भी देखा था we are going to quickly revise all those things then we have vocabs of today's session अच्छे vocabs मिलेंगे आज के सेशन में important है idioms and phrases also finally we have एक ही था but मैंने दो बना दिया उससे मिलता जुलता phrasal verbs today we do not have then we have complete analysis of today's article grammar learning tone objective and practice exercise that is your homework okay so everything we are going to do today okay now let me know if you all are ready for the revision session सभी लोग ready हैं revision session के लिए quickly let me know are you guys ready for the revision session चलिए I want very quick reply
Everyone should give the answer of this because you all were there in the yesterday's session, so I want your reply. Okay, सबके reply मुझे चाहिए quickly guys. जल्दी से match these words. फटाफट से match these words. Yes, you all are right. All are already matched. Good. I thought that you guys will get confused. Very good. Nice. Well done. So they all are already matched. तो किसी को भी मैच करने की जरूरत नहीं है बिकॉज स्लीव बेसिकली एज अ नाउन स्लीव एज अ नाउन इट मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग किसी भी चीज का ढेर सारा नंबर देखिए आप सबके रिप्लाई आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 सो एवरी वन कैन राइट वेरी गुड so many replies I got today. Today's revision is yes is a cakewalk. Cake off walk, no cake walk. Okay. So a large number of something that is called slew. Okay. As a verb, slew means to kill someone. As a verb, it means to kill someone. Entail is already matched. Entail means as a verb, it means necessitate, require, demand. So that is the meaning of the word entail as a verb. Underscore, emphasize, ठीक है, underline, emphasize, all these are synonyms. So किसी भी चीज को emphasize करना, that is called underscore. Okay. So C will be matched with third. It is already matched. Sub match है. 1 2 3. Saga is a story tale, so that is called saga. So D will be matched with four. Rule, with direct decree, order. किसी को order करना as a verb, it means ठीक है, to direct someone to give order, so that is called rule. Purported, as you know, alleged, ठीक है, so that is also matched, ठीक है. Invariably, always it is an adverb, so it is already matched. So all these are already matched. 1 2 3 4 5 6 7. Simplest homework today, right? So revision, simplest revision today. चलिए next slide, match them. अब यहाँ पे देखते हैं कितना रिप्लाई आता है. Quickly match these terms, guys. How does it feel? I didn't get a question. How does it feel to be IBPS for a day means 3 5 6 1 2 4? Let me see. Spawn, as you know, to produce a large number of something. ठीक है, production के case में, reproduction के case में we use spawn. So yes, it is a verb. So A will be matched with third. ठीक है, sorry, it is a verb. Clamor, as you know, clamor basically we call to bedlam. Pandemonium, ठीक है, शोर शराबा जिसको कहते हैं, जिसमें आपको किसी की आवाज, कोई क्या बोल रहा है वो आपको क्लियरली सुनाई ना पड़े. So that is called clamor. So B will be matched with fifth. Squatting, illegally occupying a land, किसी भी जगह को illegally occupy कर लेना, so that is called squatting. Yes. Restoration, rehabilitation, these are synonyms. Rule on, it means make an official decision. It was a phrasal verb that we saw, so yes, it will be matched with fourth. And lay down means lay down means formulate. Okay, so that is called lay down. Come, so it will be matched with 2, right? So 3 5 6 1 4 2. Yes, I guess everyone is correct. Why IBPS आपकी feelings साथ खेल रहा है ना? 3 5 6 1 4 2 correct. So this was all about yesterday's session. ये सारी की सारी चीजें कल के सेशन की थी. Now let us start today's session. ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. देखिए, कल एक मेरे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था. Arju asked this question. Actually, that is really very nice when you see anything in so much detail. एक तो मुझे मिस्टेक दिखा था. Yesterday I told you ना कि there is one article जलीकट्टू से रिलेटेड. गो थ्रू दैट आर्टिकल. अगर आपने वो आर्टिकल पढ़ा होगा तो उसमें एक मिस्टेक था, विथ अ व्यू टू के साथ V1 दिया हुआ था. दैट वाज रॉन्ग. ठीक है. So with a view to, as you know, it is a phrase and it is always followed by V1 plus ing form, and it is a very important phrase for your examination. बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है. So with a view to is always followed by ing form. So this is what I expect from you guys कि when you read any editorial, go through all the rules, because you know कि grammar जो है
एडिटर्स दे यूज इट इन अ डिफरेंट वे, और आपके जो एग्जामिनेशन में यूज होता है वो डिफरेंट होता है, बट इट डजेंट मीन दैट ऑलवेज एडिटर्स आर रॉन्ग। वो बहुत बार क्या होता है कि दे टीच यू सो मेनी गुड थिंग्स। जैसे कल एक और डाउट आया था, कम पोंगल, बोथ कैन मेक द सेंस एज पर द कॉन्टेक्स्ट। नहीं, फेयरर देन बोथ तो फिर कोई तीसरा हो जाएगा नवीन, इट विल बी ईदर ऑफ द टू, नॉट बोथ ऑफ द टू। आई विल टेल यू नवीन, ठीक है। हाँ, to is a preposition. With a view to is a preposition, so it will be followed by ing. Okay, with a view to is a phrasal preposition. Uh, and come pongal. Now it was like why it is written come, why it is not comes. Actually, we say this come is a preposition. Now you will be shocked, ma'am, come कैसे preposition की तरह use हो जाता है. So come pongal basically when any specific date or any specific time is about to occur. So we use this come word as a preposition, उसको हम ऐसा preposition use करते हैं, ठीक है। What question is this? Both we use for two only, Naveen, both for two. But if I say both also for two, now if I say both of them are fair, it means दोनों ही fair है। But the sentence you are saying that she is fairer than, कहाँ लिखूं मैं, अभी आगे लिखती हूँ मैं, आई विल एक्सप्लेन यू दिस, ग्रामर में मैं एक्सप्लेन करूंगी। वेट, थोड़ा सा मीनिंग निकालिए ना, यू विल गेट ऑल द आंसर्स, यूज योर लॉजिक सो यू विल गेट ऑल द आंसर्स। एनीवेज मैं लास्ट में डिस्कस करती हूँ, ठीक है। कम व्हाट में, कम एज अ प्रपोजिशन, कम व्हाट में हैपन, ठीक है। देयर आल्सो कम इज अ प्रपोजिशन, वी यूज इट एज अ प्रपोजिशन, टाइम के केस में यूज होता है, ठीक है। नवीन, आई विल डिस्कस योर डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। So the first word of today's session is imperative. Imperative is an adjective also, it is a noun also. Now you have to see where it, because in today's article it has been used as an adjective also and as a noun also. No, you will take it as a preposition, na? Why you will consider it as a main verb? You will consider it as a preposition. So imperative as an adjective, it also means important, and as a noun, it means an essential or urgent thing. Means important thing, that is noun, and only important it means adjective. Okay, अगर simple meaning निकल रही important, so it is an adjective. Okay. Then next, मैम LIC डबल एओ कैसी जॉब है? अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। LIC AO डबल AO, these are good jobs. Okay, बहुत अच्छी जॉब है। I still remember one of my batches. Yes, they have the flexibility because Shubham, they try to make the language. Actually, they have to focus more on figures and all these things. Okay, so that is. Yes, your separation is very painful to me, but ये सारे questions अभी नहीं आएंगे, ठीक है। अब आप लोग सारे ग्रामर के रूल लेकर के आएंगे, तो ये क्वेश्चन अभी नहीं आएगा। योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी, इट इज रॉन्ग, सेपरेशन फ्रॉम यू इज वेरी पेनफुल टू यू, अनिकेत। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जो आपको सही लगेगा बट रॉन्ग होते हैं, सेपरेशन फ्रॉम यू। बट सच क्वेश्चंस आर नॉट आज दीज डेज, ये बहुत पहले बुक में लिस्टेड होता था, बट ऐसे क्वेश्चंस अब नहीं आते। और अगर आएंगे भी तो एसएससी एलटीसी में आ सकते हैं, ठीक है, सीएचएसएल वगैरह में। नेक्स्ट, impinge. Impinge is a verb. It means to influence in a negative way. Now please let's start today's session, ठीक है। बाकी ग्रामर वगैरह सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। impinge basically we say influence in a negative way, किसी भी चीज को नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करना, दैट इज कॉल्ड impinge. Okay, impinge also you can say intrude, infringe, invade, it has two meanings, ठीक है। कि कहीं पर इलीगली किसी भी जगह को ऑक्युपाई कर लेना, ठीक है। इंट्रूड, बिना परमिशन के एंटर कर जाना, ठीक है। इन्वेड समवेयर, इम्पिंज ऑल्सो मीन्स इन्फ्लुएंस इन अ नेगेटिव वे, इट इज अ वर्ब, क्या वर्ब है आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, एलैक्रिटी, अ वेरी वेरी गुड टर्म। एलैक्रिटी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। एलैक्रिटी इज अ नाउन, इट मीन्स ईगरनेस, फर्वर, फर्वर, फर्वर यू नो पैशन, ठीक है। रेडीनेस, किसी भी काम को करने के लिए आप अपनी विलिंगनेस दिखा रहे हैं, विलिंगनेस यू कैन से। सो ऑल दीज आर द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड एलैक्रिटी, इट इज अ नाउन। ओके, the next word we have is outdated. Outdated, as you all know, archaic, obsolete, anachronistic, A. So anachronistic, all these are the synonyms about the word outdated. Okay, so outdated मतलब जो चीज no longer in use, something that is no longer in use, जो बीत गई है, that is called outdated. Okay,
एंड द एंटोनिम ऑफ आउटडेटेड विल बी वोग. इसका अपोजिट अगर पूछा जाएगा तो इट विल बी वोग. ठीक है, एंटोनिम वोग बेसिकली वी कॉल टू समथिंग दैट इज इन यूज, जो यूज में है, ट्रेंड में है, दैट इज कॉल्ड वोग. And outdated we call to no longer in use, anachronistic, obsolete, archaic, all these are synonyms. Okay, then commence, we have seen this word so many times. Comment basically we say start or begin. Yes, in use, in fashion, in trend, all these are vogue. Correct. So commence is a verb. Commencement मैंने बताया था, तो commencement we call to starting, genesis. Okay, origin. Commence we call to start, begin. It is a verb. Okay. Then next, ये सारे एक साथ आ गए, कोई नहीं. Decennial. Decennial is also a very important term. Decennial जैसे आप कहते हैं ना कि something that occurs in every 10 years, कि कोई चीज जो हर 10 साल पे होती है, so that is called decennial. Okay, so occurring every 10 years or lasting for 10 years, कि जो 10 साल तक चले या हर 10 साल पे हो, so that is called decennial. Okay. जेनोसाइड यहाँ पे कहां से आ गया? जेनोसाइड वी कॉल टू मास मर्डर, किलिंग ऑफ रेस और सिविलाइजेशन. साइड मतलब मर्डर, जेनो मतलब जीन. तो पूरे एक तरह से सिविलाइजेशन का जो मर्डर हो रहा है दैट इज कॉल्ड डेसेनियल, सॉरी दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड. ओके, किलिंग ऑफ सिविलाइजेशन. मसैकर भी कह सकते हैं, मसैकर. यस. सो ओवर स्टेट बेसिकली वी से एग्जैजरेट, ड्रामेटाइज, ओवर प्ले. ओवर स्टेट का मतलब किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बात करना. सो दैट इज कॉल्ड ओवर स्टेट. अंडर डू मतलब किसी चीज को कम समझना, और ओवर स्टेट मतलब एग्जैजरेट किसी चीज को, ड्रामेटाइज, ओवर प्ले, दैट इज द मीनिंग ऑफ ओवर स्टेट. इट इज एन एडजेक्टिव. ओवर स्टेट इज अ वर्ब. अंडरपिन एज यू नो सपोर्ट, बट्रेस. अब देखिए अंडर स्कोर मीन्स टू एम्फोसाइज समवन. ठीक है, टू एम्फोसाइज समथिंग. अंडरस्कोर, एम्फोसाइज. अंडरपिन मींस सपोर्ट और बट्रेस. ठीक है, किसी भी चीज को सपोर्ट करना. एंडोर्स यू कैन से, बट्रेस यू कैन से. ऑल दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अंडरपिन. इट इज आल्सो अ वर्ब. ठीक है. The next word we have is enumeration. ठीक है, enumeration basically you say the act of mentioning a number of things one by one. मतलब ये एक पूरी तरह से process है. It is a noun. So this is an act of mentioning a number of things one by one. एक एक करके किसी भी चीज को mention करना, that is called enumeration. Yes, there is a good phrasal verb called hold up also. You know, hold up has two meanings, one positive and one negative. As a positive, it means endorse, support. As a negative, it means detain or delay. Okay, delay. The next word we have is critical. अब देखिए critical can as a it has multiple meanings. Critical means condemning, reproving, criticizing. ये सारी meaning होती है critical की. Critical we can also say he is in a critical condition. It means very serious condition. Critical situation, that is grave situation, serious. Okay. And critical we say vital or imperative. Means as an adjective it means all these three meanings. Shubham is a this literature person. Clear everyone? So critical has so many meanings. It has grim, grave, serious, criticizing. जैसे हम tone करते हैं कि critical tone we have, that is criticizing tone, and vital, imperative, that is also. ठीक है? Next question. Disparity, as you know, disparity is a noun. It means difference or discrepancy. So difference or discrepancy, that is called disparity. The next word we have is apportion. This is also a good word. So apportion basically we say allocate or distribute something. Okay? It is a verb. Apportion is a verb. To allocate something, to distribute something, that is the apportion. Clear everyone? Got all the words? Apportioning we say. So allocate, distribute, that is the meaning. So now phrase, idioms and phrases, we have two idioms and phrases today. So the first idiom is inline. Inline means in conformity or agreement. Okay? Behaving as required. In conformity or agreement, behaving as required, that is called inline. Okay? The next word we have is barbarian. Basically, we say uncivilized, cruel. Barbarian means uncivilized, cruel. Okay? That is the meaning. ऑन द लाइन. नो सी, इन लाइन एंड ऑन द लाइन, ये आपके फ्रेज में यूज होगा. ठीक है, आर्टिकल में यू विल गेट दिस सेशन. एंड ऑन द लाइन बेसिकली वी से टू इंडेंजर्ड और एट रिस्क. कोई चीज अगर खतरे में है तो वी से ऑन द लाइन.
Guys, please stop unnecessary chats and please concentrate on the session. So in line we say in conformity or agreement, behaving as required. On the line we say endangered or at risk. Okay, so that is the meaning. Uncivilized, undefined, all these are the meaning of the word barbarian. Clear everyone? Any confusion in any word? I hope today we got many good words. चलिए आगे बढ़ते हैं. So as you know, we have already launched IBPS PO personalized interview batch. Those who are interested, they can definitely join this batch using my code SAVA for maximum discount on Oliboard platform. A personalized banking mentorship program, those who are preparing for the upcoming examination 2024 2023. So this batch can be very very important for you all. ठीक है, यहाँ बैच नहीं है, बेसिकली एक ये पूरा कोर्स है आपका, आप कह सकते हैं, जहां पर आपको 1:1 मेंटोरशिप, लाइव क्लासेस, मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन, मॉक इंटरव्यूज, इंटरव्यू प्रिपरेशन, फिजिकल बुक्स, ये सारी की सारी चीज आपको मिलती हैं. सो कंप्लीट थिंग यू हैव हियर, सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स ऑल्सो यूजिंग माई कोड सभा. The validity will be till March 2024. इसकी validity March 2024 तक की है. If you don't want to go for banking personalized course, then the best option for you is banking super elite. Either of these two you can choose. इन दोनों में से कोई भी एक choose कर सकते हैं. So यहाँ पर banking super elite में भी you will not get 1:1 this mentorship, but yes, all the live classes and mock test will be available here also. So you can join banking super elite also. As you know, tomorrow is 11. From tomorrow we are starting our foundation batch, Lakshya batch. तो बेसिकली इंग्लिश के लिए तो मुझे लगता है सबको ही जरूरी है, तो यू डेफिनेटली ज्वाइन दिस फाउंडेशन बैच. यूज माय कोड सबा फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन Oliboard platform. This is my Telegram channel. Those who haven't joined this Telegram channel, so join it for updates on every session and for PDF updates and PDF. एक और वर्ड है garrulous. Garrulous we call to talkative, like you guys are garrulous. Garrulous, loquacious, it means talkative, जो बहुत बातें करता है. ठीक है, like when you people start chatting now, so you people are garrulous, one who talks a lot. Okay, now let's see today's article is important guys. चलिए फटाफट से देखिए. Let me hide myself. Oh, let me hide this also. Now start reading guys. Yes. Quickly read it. Gia is asking, ma'am, a portion? No, a portion is not a noun. देखिए अब यही चीज आपको मिलेगा. I will tell you, Gia, very good question. So you will get the this usage of English. You will come to know. Quickly read it, guys. Okay. I hope you all might have read. Okay. This much time is enough. Okay. See, time to count. Time to count what? Time to count the. Actually, this article is basically on the delay in census. Okay, जो census हम लोग हर 10 साल पे conduct करते हैं, तो it is basically related to delay in that. Okay, so it is time to count. मतलब अब हमें अपनी counting start कर देनी चाहिए related to census. Okay, so on government's delay in conducting census, government जो है काफी delay करी census को conduct करने में, so it is basically on that. Okay, इसके क्या क्या impacts होंगे, all those things have been discussed. The census is too vital. Now you will say, see one good grammatical usage here. ठीक है, जनगणना, correct. So the census is too vital for the government to delay it. What does it mean? TOO2 and TO2, they always carry negative sense. मतलब the census is too vital. Vital here means important. वो इतनी important है कि government should not ignore it. जैसे we say ना, he is too old to walk. It means he is so old that he cannot walk.
Same sense is here we are getting कि the census is so important that the government should not delay it any further, कि ये इतना जरूरी है कि गवर्नमेंट को फिर इसको और ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए. So did you get the point? यहाँ पर अगर आप very लिख देंगे, so लिख देंगे, it will always be wrong because TOO2 is all followed by TO2. What everyone? तो ये पूरा एक तरह से important का सेंस दे रहा है कि it is so important that it should not be delayed any further. The importance of the decennially conducted census. Decennially means हर 10 साल पे, every 10 year. ठीक है, every 10 years, every 10 years. ठीक है, ये कंडक्ट किया जाता है. कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, इसको एग्जेजरेट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस दैट इज नोन टू एवरीवन, सो इट कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड बिकॉज इट इज ऑलरेडी नोन टू एवरीवन दैट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज. As it tallies data on several features of the Indian population. This census doesn't mean that only we are counting population. It tallies several data like basic demography, literacy levels, caste status, education levels, spoken languages, religion, marital status, occupation, and migration status, among others. The census is also vital to administrative functions and planning of welfare schemes. So it is not only that we are counting the population when we are conducting this census. It helps us in so many things because with this count only we come to know about the literacy level, caste status, education level, ki how much we have improved, whether we are improving or not. Okay, so in all these things census is very important. Also it is important for administrative functions. The administrative functions के लिए भी census बहुत important है because it helps us in planning of welfare schemes. Okay. Very important. So census data are also critical. So critical here means important. It is not used in serious or negative context. Important. As they are used as a frame to underpin other sample surveys that are representative of the whole population. तो जो डेटा होता है सेंसस का वो भी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट इज यूज्ड एज अ फ्रेम. वो एज अ फ्रेम यूज किया जाता है टू सपोर्ट अदर सैंपल सर्वेज. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो सिर्फ इस सेंसस के बेसिस पे हम अचीव कर सकते हैं. वी कैन डू दैट. The national census is utilized by international agencies to project the world's population as well. So it doesn't help in nationally only, internationally also it helps कि यहाँ पे जो हर नेशन का सेंसस होता है उसी को जो वर्ल्ड एजेंसीज होती हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं, दे यूज दीज सेंसस टू प्रोजेक्ट द वर्ल्ड्स डेटा. ठीक है, वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. इंडिया हैज कंडक्टेड द सेंसस एवरी 10 years. हर 10 साल पे इंडिया ने कंडक्ट किया सर्वे. कब से 10 सॉरी सेंसस कंडक्ट किया है हर 10 साल पे 1881 से. मतलब विदाउट फेल वी कंडक्टेड सर्वे एवरी 10 years. ठीक है, only 2021 a pandemic affected year was an exception as the exercise was postponed. कि सिर्फ ये पूरा जो एक्सरसाइज था सेंसस काउंट करने वाला ये 2021 में ही अफेक्ट हुआ था. इट वाज पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. ओके, with the deadline for freezing of boundaries further extended to June 30, 2023. Now, freezing of boundaries means आई थिंक कि यहाँ पर जैसे वेन एवर वी काउंट सेंसस तो बहुत सारी चीजें होंगी ना कि अगर जैसे पॉपुलेशन आपको काउंट करना है तो एक पर्टिकुलर डे पे आप कुछ चीजें लिमिट करेंगे. अदरवाइज एवरी डे पीपल आर डाइंग, एवरी डे पीपल आर दिस दे आर टेकिंग बर्थ. ओके, सो इट वोंट बी पॉसिबल कि अगर वो कंटिन्यू रहता होगा तो इट मीन्स कि कोई एक ऐसा टाइम होगा जहां पर उसको डेड किया मतलब फ्रीज किया जाएगा और उस टाइम तक के पूरा डेटा लिया जाएगा. ओके, so now this deadline for freezing of boundaries further extended to June 30, 2023. अब वो फिर जून तक बढ़ गई है. ठीक है, the census can effectively be conducted only some months after this event. अब जब यहाँ पे बाउंड्री फ्रीज करने की डेडलाइन बढ़ गई है तो इट मीन सेंसस विल बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर मंथ्स ऑफ दिस इवेंट. मतलब यू कैन एक्सपेक्ट कि अगस्त सितंबर तक ही सेंसस कंडक्ट हो सकता है. बिफोर दैट इट वोंट बी पॉसिबल. ओके, वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स. Acha, here you are talking about. Census data are also critical as they are used as a frame to support other sample surveys that are representative of the whole population. Representative will also function. It is not wrong. कि मतलब जो represent करते sample surveys अपने अपने field को represent करते होंगे तो it may be possible it is correct. Okay. Vital to ing can be followed. Two is if two is a preposition so ing can be followed. चलिए next. Any more doubt? कहाँ है vital to दिख कहाँ रहा है मेरे को? अगर प्रपोजिशन होगा तो आईएनजी कैन बी फॉलो. ठीक है, हाँ. The census is vital to administer. So to is a preposition here. Administrative functions, it is a noun. So it is a preposition here only. Okay, चलिए next.
सेंसस एन्यूमरेशन इज प्रिसीडेड बाय एक्टिविटीज सच एज हाउस लिस्टिंग। मतलब अब ऐसा है कि काउंटिंग जो स्टार्ट होती है, ऐसा नहीं हुआ कि मतलब सेंसस हमें काउंट करना तो एकदम से स्टार्ट कर दे, उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन होती है। सो दे आर प्रिसीडेड बाय, इनके पहले बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग इज हाउस लिस्टिंग, पहले सारे हाउस को लिस्ट किया जाता है। ओके, most states were in line to begin this in early 2020 before the COVID-19 pandemic. सोचिए सेंसस आपको 2021 में कंडक्ट करना था, बट ये सारे एक्टिविटीज बहुत पहले स्टार्ट हो जाती हैं. So most states were in line. It means they were ready to begin this in early 2020 before the COVID-19 pandemic hit. उसके पहले ही ये लोग रेडी थे इसको करने के लिए. ठीक है? Yes. But the repeated postponement and consequently the undue delay in census commencement will severely affect the availability of vital information on popular numbers at district and other lower levels. Okay, so even though they were ready to start all these procedures in early 2020, but after that it got delayed and the repeated postponement, मतलब बार बार ये postpone ही हो रहा है. Consequently the undue delay in the census commencement, मतलब अगर हम इसको start करने में और ज्यादा delay करेंगे, so it will severely affect the availability of vital information. बहुत सारे vital information होंगे जो हम नहीं collect कर पाएंगे. We won't be able to get that. Okay. On population numbers at district and other lower levels, कि district level पे lower levels पे there will be so many things that we won't be able to get that. ठीक है? The pandemic has been cited as a reason for the delay. Now you know authorities, they have only one reason, that is pandemic. Okay. The fact that lockdowns and physical distancing norms are now a things of the past. लेकिन अब ये past की चीजें हो गई है, lockdown and physical distancing norms. And infection levels in the country have remained relatively low over since the last Omicron variant wave happened in early 2022. मतलब अगर आप पूरे लॉकडाउन की बात करेंगे या फिर वेव की बात करेंगे तो लास्ट जनवरी के बाद ऐसा कोई चीज नहीं हुआ था. सो दीज ऑल थिंग्स सजेस्ट दैट. ओके, ये फैक्ट के लिए यूज हुआ है. द फैक्ट इज सिंगुलर, सो दिस वर्ब इज यूज फॉर द फैक्ट. ओके, सो द फैक्ट सजेस्ट दैट. देखिए सब्जेक्ट यहाँ, वर्ब यहाँ, यहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है? The fact suggests that this is no longer a valid excuse. Now the authorities, if they cite this excuse की मतलब हाँ because of pandemic, so this is no longer a valid excuse. ये कोई a valid excuse नहीं है. In fact, census data should validate the various estimates on mortality based on excess deaths analysis during the COVID-19 pandemic. Even census data से हमें जो death हुई है ना COVID-19 में जो actual death हुई है, we will also get to know all those things. Okay. Also, it is imperative, you know, important. It is an adjective that decadal changes in India's demography related to urbanization and migration of people across states are captured adequately. So there are many factors in which this census help. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर ये census जो है help करता है. Okay, block in guys. Welfare schemes such as targeted public distribution system under the National Food Security depend on population estimates, and the government continues to rely on census 2011, which is now clearly outdated. मतलब वेलफेयर स्कीम्स है जैसे टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ठीक है? पीडीएफ जो होती है जो अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो हम लोग फूड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो दैट डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन एस्टिमेट्स. वो सारे वेलफेयर स्कीम्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? पॉपुलेशन एस्टिमेट्स पे. एंड द गवर्नमेंट, बट स्टिल अवर गवर्नमेंट it is relying on depending on census 2011 data. सोचिए इतना पुराने डेटा पे हम लोग ये सारे काम कर रहे हैं. So of course this data is completely outdated, old now. It is no longer valid. Okay. Interstate disparities, differences in population growth rates could also impinge upon debates on the prospective delimitation of electoral boundaries and apportioning. It is a verb guys. देखिए ये आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा. आपने हमेशा अभी तक देखा होगा कि ION इट ऑलवेज फंक्शन एज अ नाउन. किसी भी वर्ड के लास्ट में ION दिया होता है तो दैट ऑलवेज फंक्शंस एज अ नाउन, बट दिस इज द वर्ड दैट फंक्शंस एज अ वर्ब. ठीक है? और अब ऐसा नहीं कि ये नाउन होके वर्ब की तरह काम करता. नो, इट कैन नेवर फंक्शन एज अ नाउन. इट इज नॉट अ नाउन, इट इज अ वर्ब ओनली. क्लियर एवरीवन? सो इट्स V2 फॉर्म विल बी apportioned, apportioning, इस तरह से इसके V2 फॉर्म होंगे. इट इज नॉट अ नाउन, इट इज अ वर्ब. तो इंग्लिश में ये जो एक्सेप्शंस होते हैं ना, जैसे हम लोग कभी भी 100% का यूज नहीं करते. No one can say कि 100% apportion is what it is, like ION is always noun, ये नहीं कहा जा सकता. So you will get a few exceptional cases. ऐसे exceptional cases आपको दिख जाएंगे. Okay. So it is always a verb. It is never a noun. Got it, Jia?
Impinge basically we say influence in a negative way, किसी गलत वे में influence करना, okay, affect negatively. Apportion, yes. So सो इंटर-स्टेट डिस्पैरिटीज डिफरेंसेस, जो इंटर-स्टेट डिफरेंसेस है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स में, कुड आल्सो इन्फ्लुएंस अपॉन डिबेट्स, मतलब ये भी नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है, ऑन प्रोस्पेक्टिव डिलिमिटेशन ऑफ इलेक्टोरल बाउंड्रीज एंड अपोर्शनिंग ऑफ सीट अक्रॉस स्टेट्स, मतलब यू नो कि हर स्टेट में इलेक्शन के टाइम पे सीट्स होती है ना, कि किस स्टेट में कितना सीट्स है, सो दिस डेटा कैन इफेक्ट दैट ऑल्सो, उसको भी इफेक्ट कर सकता है, ओके. Considering these and other imperatives, what is imperative here? Is it a noun or verb? What is imperative here? Now, here we saw imperative as an adjective, and here imperative is a noun, not verb, it is a noun. Other imperatives means other important things. Considering these and other important things for the smooth planning and implementation of administrative welfare and statistical management for governance, the union government must show alacrity in commencing the census. मतलब इन सारी चीजों को माइंड में रख करके, मतलब there should be smooth planning, there should be well implementation of all the administrative welfare and statistical management for governance. Union government should show alacrity. Alacrity means eagerness. उसको फटाफट क्या करना चाहिए, census conduct कर देना चाहिए. In commencing, commencing means starting the census. Clear everyone? Got? So yes, imperative is a noun here. So I hope article is again very important, guys. In fact, this article can be important for your descriptive also. सेंसस वगैरह से रिलेटेड आ सकते हैं, ओके. ये पूछा जा सकता है इकोनॉमी में इसका रोल क्या हो सकता है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, ओके. इस तरह से आर्टिकल्स मॉडिफाई की जाती हैं. सो द मोर यू रीड द मोर यू गेट. सो सेंसस के कितने सारे यूसेजेस हैं, यू विल गेट ऑल दीस थिंग्स, ओके. यस, फ्यूचर प्रपोजल ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सीट्स इन बोथ, यस, सो इज कमिंग. क्लियर एवरीवन? चलिए, फाइंड द एरर, फाइंड द एरर गाइस. Shubham, today join 9 a.m. session. I have one RC for you only. Pure literature based. But anyone can do. Yes, this article is going to be helpful in interview also, because you never know क्या पूछा जा सकता है. Phrasing boundaries means trying to lock certain thing, like when we have to count the population and other things, so we try to limit certain thing, because with data is changing every day, so you can't continue, you can't do the census in a proper way when this data are changing, so you will have to put one deadline, you have to freeze all those things, okay. So locking basically it is, it's an, everyone is saying b. Oh, everyone क्या, I'm a banker only, he's saying so many times. Guys, एक ही बार आंसर दिया करिए, डिपेंड्स. सो एवरीवन इज सेइंग दैट एरर इज इन बी पार्ट, दैट इज डिपेंड्स. आप लोगों को ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिखा सिखा के मैं बूढ़ी हो जाऊंगी. व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर गाइस? अगेन एवरीवन इज सेइंग दिस, सब्जेक्ट इज वेलफेयर स्कीम्स. स्कीम्स इज प्लूरल, हाउ कैन यू से डिपेंड्स, मतलब एरर खोजना है चाहे जो करना है. What is the subject here? Subject is welfare schemes. Schemes plural, so we need a plural verb. How it is wrong? Tell me. कैसे ये गलत हुआ? अभी मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था. Here also, somewhere I told you ना, this subject verb agreement. कहीं तो बताया था मैंने. Yeah, the fact. Here the subject is here, the verb is here. So subject और verb का agreement you don't have to see कि बीच में कितने words आ रहे हैं. ठीक है, बीच में अब जैसे अगर ये मैं पूरे sentence को explain करूं आप लोगों को. If I explain the entire sentence, wait. ये पूरा हटाने दीजिए मुझे, रेड रेड यहां से यहां तक देखिए आप लोग से, इसके बीच में न जाने कितने सिंगुलर प्लूरल वर्ब्स आए होंगे, बट डेफिनेटली सबके सब्जेक्ट अलग अलग होंगे. द फैक्ट दैट lockdowns and physical distancing norms are, so this r is used for lockdowns and physical distancing norms. इसका सब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है, ये पूरा एक हो गया. थिंक ऑफ द पास्ट एंड इन्फेक्शन लेवल्स इन द कंट्री, ये इसका वर्ब ये हो गया, इन्फेक्शन लेवल. देखिए बीच में कितने सब्जेक्ट और कितने वर्ब आए, बट द सब्जेक्ट, द वर्ब ऑफ दिस फैक्ट इज स्टिल नॉट नोन. इसका वर्ब क्या है वो आपको आगे पता चलेगा. रिमेन रिलेटिवली लो ओवर सिंस द लास्ट ओमरिकन वेरिएंट वेव हैपेंड. ये इसका लास्ट है, ये पास्ट टेंस हो गया. प्रेजेंट पास्ट सारे टेंस आ गए हैं. अब यहाँ पर एक ही वर्ब बचा है, एंड दिस वर्ब इज द दिस वर्ब agrees with the subject fact. Fact is singular, so we have used a singular verb.
नाउ अगेन वी हैव अनदर वर्ब दैट इज ये इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, दिस हो गया। सिंपल सी चीज है। इतने सारे वर्ब्स, अगर आप देखिए सो मेनी सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट 3-4 सब्जेक्ट्स एंड 3-4 वर्ब्स वी हैव यूज्ड इन दिस सेंटेंस, पूरे के पूरे सेंटेंस में। बट आइडेंटिफाई द वर्ब, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है ना, इसमें आप इसको लर्न नहीं कर सकते हैं। यू नो सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, इसके अलावा कुछ नहीं है। बट दिस डिपेंड्स अपॉन योर आइडेंटिफिकेशन कि कहां से कौन सा सब्जेक्ट आएगा, कौन सा वर्ब आएगा। सो अगर आप इसको आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे तो यू विल नेवर फेस प्रॉब्लम इन दिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सेम केस इज हियर। Welfare schemes we are talking about, such as the targeted public distribution system under the National Food Security Act. इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ये एग्जाम्पल दिया गया है, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो schemes is plural, so we need a plural verb, that is correct. अब आगे बढ़ते हैं, and the government continues, government is singular, so we have a singular verb, this is also correct. To rely on census 2011, which is, so it is for census 2011 जो कि अब पुराना हो चुका है, तो census singular है, so we have used a singular verb, everything is correct, there is no error, everything is correct, there is no error in the sentence. Clear everyone? Try to identify subject and verb, because the day you will be able to identify subject and verb ना, बाकी error तो आपको आराम से दिख जाएंगे, वो आराम से दिख जाएंगे। Depend on population estimates, it is noun. Estimates is not a verb, it is a noun here. It depends on population estimates. Okay, clear everyone? So please try to identify, because this is the only thing that will confuse you a lot. यही एक ऐसी चीज होती है जो आपको बहुत ज्यादा confuse करेगी. So there is no error in this sentence. Every like the sentence is absolutely correct. एनी में सब एरर दिखता है, राइट? देखिए मुझे पता है आप लोगों का लॉजिक है, अगर मैं यहाँ पे डिपेंड्स देती ना तो भी आप बी में एरर लगाते, तब आप डिपेंड्स को डिपेंड करते और डिपेंड दिया तो डिपेंड्स करेंगे। Almost all topics of English getting improved day by day except error detection. What steps should be taken to get it addressed? The only step, join the foundation batch. Because I know reading the rules from the book is completely different and attending the session is completely different. So once you attend all the topics, grammar, like all the rules topic wise, okay, so definitely it will help you a lot. So please do join if you really want to improve your grammar. So do join your foundation batch. Okay, so that is very, very important. Yes, fact, universal to definitions are written in simple present tense. Actually, facts are in simple present tense, but perfect tense, it depends कि आप किस टाइम की इसको चीजों को दे रहे हैं. Okay, so that is the thing you have to see. Now, find the tone. What is the tone of today's article? Yes, tone is completely analytical and a bit concerned. So yes, it is concern. Suggestion भी है कि मतलब they should conduct the survey. So थोड़ा बहुत suggestion भी है, but overall tone अगर आप बात करेंगे तो it is analytical and concern, because delay से it is just a matter of concern only. Okay, so somewhat it is this concern suggestion also. ठीक है, last line you know suggestion होता, but overall tone is what, analytical and concern. Okay, yes, correct. हाँ देखिए, यू इट्स ओके, नो डाउट इज फुलिश, कोई डाउट ऐसा नहीं होता, कोई क्वेश्चन सिली क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। हाँ नवीन, आई गॉट योर क्वेश्चन, जैसे आपने लिखा शी इज फेयरर देन बोथ ऑफ देम। नो हियर, यहाँ पर बोथ ऑफ देम में शी विल बी द थर्ड पर्सन, सो ये चीज तो बनेगा ही नहीं ना, बिकॉज दोनों से ज्यादा फेयर वो है, इट मीन्स तीन में से कंपैरिजन हो रहा है, सो दिस स्ट्रक्चर विल नॉट बी करेक्ट। सो दैट इज वाई शी इज फेयरर देन ईदर ऑफ देम, मतलब देयर आर टू पर्सन, शी उनमें से एक है तो दोनों में से वो ज्यादा फेयर है। सो आई होप यू गॉट द आंसर। ओके, yes, correct Naveen, you are right. Okay, because if you write to both, so it means there will be 3%, because आप फिर she को exclude कर देंगे, so it will be 3%. Okay, so that is why she is fairer than either of them. Okay, so my class time, it is 7 a.m. and 9 a.m. Now after this I will meet at 9 a.m. for totally blank session. ठीक है, ये editorial हो गया, please do this homework, use these phrases in a sentence of your own. ठीक है, so 9 a.m. again we will meet today. Every day I join live at 7 a.m. and 9 a.m. on YT. ठीक है, तो जो लोग नए हैं एक बार प्लीज सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगेन वी विल मीट एट 9 a.m. with some amazing questions. Okay, thank you guys. I'm ending this session.